Very good morning. In the series of Booker Prize winning writers and novels, you are once again welcome. And in today's class, we are going to talk on the Booker Prize 2021. Who is the winner and which novel was the winner? Which book won the Booker Prize in 2021? And the Booker Prize of 2021 was won by डगलस स्टुअर्ट. डगलस स्टुअर्ट की नॉवेल है. द नेम ऑफ द नॉवेल इज शुगी बेन. द नेम ऑफ द नॉवेल इज शुगी बेन and written by Douglas Stewart, and he won the 2021 Booker Prize. Not the Man Booker Prize, but he won 2021 Booker Prize, Shuggy Bain. And Shuggy Bain was his debut novel. Debut novel means it was his first novel ever written. पहली नॉवेल थी उनकी और इसी के लिए उन्होंने जीता है. एंड डगलस की अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन ग्लासगो. ही वॉज अ स्कॉटिश लिविंग इन अमेरिका, और अमेरिका में लिविंग नॉट एज अ राइटर बट एज अ फैशन डिजाइनर. अ सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर रहे हैं और उन्होंने इस नावल को लिखा है. हिज लिटरेचर, हिज लिटरेरी एक्टिविटीज पहले से भी न्यूयॉर्कर और लिटरिंग में पब्लिश होती रही है. ये उनकी फर्स्ट नावल है. एंड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ दिस नावल ही वाज रिजेक्टेड एटलीस्ट बाय 30 पब्लिशर्स. 30 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था इनकी नावल को पब्लिश करने से ही इनके नावल को एक्सेप्ट करने के लिए. But when his novel was accepted, he won this supreme prize in the field of literature, Booker Prize. The story is set in Glasgow and it tells the story of youngest of 3 children. एक फैमिली होती है और फैमिली के 3 बच्चे होते हैं और उस 3 में एक का नाम है शुगी बेन और शुगी की स्टोरी है ग्रोइंग अप विद हिज अल्कोहलिक मदर एग्नेस, set in 1980s in the post-industrial working class Glasgow. राइट, तो पहले नॉवेल इन मेकिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं, नॉवेल की स्टोरी की ही बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम आते हैं मेन जो है शॉर्ट लिस्टेड और बुकर लिस्टेड पर. द नॉवेल वाज अवार्डेड 2020 बुकर प्राइज, मेकिंग स्टुअर्ट ओनली द सेकेंड स्कॉटिश राइटर फॉलोइंग जेम्स केलमैन. जेम्स केलमैन को 1994 में बुकर प्राइज मिला था एंड ही वाज द फर्स्ट स्कॉटिश राइटर. James Kellman was the first Scottish who won the Booker Prize right in 1994, and then Douglas Stewart, second Scottish who won the Booker Prize in 2020 for the novel Shuggy Bain. Right, Shuggy Bain के लिए 2020 में इनको प्राइज मिलता है. Shuggy Bain was also the finalist for the 2020 National Book Award for Fiction. Right, कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी Shuggy Bain. The novel sold more than 1.5 million copies in 2022. When the novel was published, it was the peak time of COVID. COVID का बिल्कुल पीक टाइम था and the award ceremony was held online, not offline. Douglas Stewart won the Booker Prize in 2020. He was born and raised in Glasgow. Shuggy Bain is his widely acclaimed debut novel, and after graduating from Royal College of Arts in London, Stewart moved to New York City where he began a career in fashion design. जहां पर उन्होंने फैशन डिजाइन में अपना करियर शुरू किया. तो स्टोरी की बात करें तो द नॉवेल ओपन्स इन 1992. द नॉवेल opens in 1992. This is the setting, Glasgow की है. When Shuggy Bain is 15 years old, the title character is 15 years old and he lives alone in a boarding house in Glasgow, working shifts at a supermarket daily and aspires to be a हेयर ड्रेसर. हेयर ड्रेसर उसको बनना होता है
एंड वन डे होता क्या है कि ही लीव्स हिज वर्क प्लेसिंग टिन कैन्स ऑफ फिश इन हिज बैग. देन द नॉवेल शिफ्ट्स इन फ्लैशबैक. इन 1981 की स्टोरी बताती है when Shugi was merely around 10 years old. In 1981, 5-year-old Shugi, 5 साल का Shugi था and living in a tenement flat in Shite Hill with his maternal grandparents जिनका नाम होता है वुली एंड लिजी. वुली एंड लिजी के साथ मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ रह रहा होता है. मदर उसकी होती है एग्नेस वेन. Agnes Bain was the name of the mother, right? And he was living with his father, Shug Bain, his half brother Leek, and his half sister Catherine. Father, half sister Leek, and half brother Leek, half sister Catherine, and father Shug Bain. इनके साथ रह रहा होता है. Shug Bain was a cab driver and he was having affairs with a number of women. Agnes is beautiful woman often compared to Elizabeth Taylor, but she is unfulfilled by her life and takes to drinking. शराब पीना शुरू कर देती है. अगले साल क्या होता है? Shug moves family into a council flat in Pithead. फैमिली दूसरी जगह पर मूव कर जाती है, right? For families of workers of the local mine, and he ultimately abandons the family. Shug family को अपने छोड़ देता है. Meanwhile, Shug is bullied at schools and in the neighborhood for not fitting in and for being effeminate. Shugi often misses schools to act as his mother's caregiver during her hangovers. मदर जो है एल्कोहलिक हो जाती है और ये दो बच्चे जो उसके और हैं वो तो उसको छोड़ करके चले जाते हैं और ये जो शुगी है ये पूरी लाइफ अपने केयर टेकिंग में मदर की लगा देता है. वो भी तब जब माँ शराब पी करके हैंगओवर में चली जाती है. एग्नेसेस पेरेंट्स डाई एंड हर डॉटर मैरीज यंग और शादी करके शी शिफ्ट्स टू साउथ अफ्रीका. एग्नेसेस एल्कोहलिज्म स्लोली वर्सेंस. खूब शराब पीना शुरू कर देती है and she is taken advantage of several abusive men. Her future looks brighter when she starts going to a institute जो शराब को छुड़वाने का काम करते हैं. एल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम होता है. वहां जाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे she quits drinking. शराब पीना छोड़ देती है और फिर एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू करती है. वहां पर एक दिन एक और ड्राइवर मिलता है और उससे उसका अफेयर शुरू हो जाता है. And that driver forces him to start drinking again. फिर से शराब पीना शुरू कर देती है. रिजल्ट क्या होता है? नौकरी से हाथ धोना पड़ता है. नौकरी चली जाती है. Agnes's alcoholism continues to alienate her from her children. In one of her drunken rages, एक दिन क्या करती है? She kicks Leek out of the house. And despite her behavior, Shugi maintains an unwavering promises to stop unwavering devotion to her mother. The two of them move to a more inner city neighborhood and Agnes once again promises to stop drinking. But unable to change their circumstances, their relationship becomes strained as Shugi grows older. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है माँ से भी उसके रिलेशन खराब होते जाते हैं. एंड एक दिन क्या होता है? इन अ ड्रंकन स्टुपर एग्नेस डाइज आफ्टर इनहेलिंग हर ओन साल्विया. अपने साल्विया को इनहेल कर लेने से एक दिन उसकी डेथ हो जाती है. और फिर बैक इन 1992 शुगी गिव्स द टिन्स ऑफ फिश टू हिज फ्रेंड लीनी who gives them to her homeless alcoholic mother. This was the entire story of the novel Shugi Bain. Right? एक child और एक mother के relationship को दिखाया गया है कि how a child is so much caretaking and how mother become an alcoholic बन जाती है. And what was the impact of alcoholic mother on the family and what was the impact of the philanderer husband on the family. Only one child is there, Shugi, who takes care of her mother
and finally she dies in her hangover. शराब के नशे में ही एक दिन मर भी जाती है. तो this was the entire story of the novel Shuggy Bain. Right? Shuggy Bain is the leading character, is the protagonist, and the novel focuses on the relationship of a mother and son. डगलस स्टुअर्ट की ये खुद की कहानी थी, खुद की बायोग्राफी थी. उनकी मदर भी एल्कोहलिक हो गई थी. एंड व्हेन ही वाज अवार्डेड द बुकर प्राइज इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, इन द पोस्ट इंटरव्यू उन्होंने कहा था अपने इस नॉवेल के बारे में, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था. द स्टेटमेंट, दैट वेरी स्टेटमेंट विल टेल यू द एंटायर स्टोरी ऑफ द नॉवेल. In post-win interview, Stewart said, I grew up in Glasgow in the 1980s, which was an incredibly tough time for a lot of people there. And my mother, unfortunately, suffered with addiction. And she didn't survive that addiction. She died when I was still a child. माँ की भी, इसके भी माँ की डेथ हो गई थी उसी एडिक्शन की वजह से जब ये सिर्फ एक चाइल्ड था. And he has written a short of his biography in the novel. And so for 30 years I have carried a lot of loss and love and pain, and I wanted really just to tell the story of what it was like to grow up queer in Glasgow with a parent who you loved but you couldn't save. And Shuggy is a work of fiction. It is, but writing the book was incredibly healing for me. I think men from the west coast of Scotland are not ever expected to be able to express their feelings or their finer feelings, and so art is a great receptacle for that. And to be able to connect with people and to ask for empathy from readers, and they have really given it, has been justly, hugely cathartic. Entire novel Shuggy Bain was the reflection of Douglas Stewart's autobiography, what had happened in the life he had written. And Shuggy Bain is the prototype. Shuggy Bain is the alter ego of the writer, right? उसी का वो alter ego है, उसी का वो second half है. And through the mouth of Shuggy Bain, Douglas has written his own story, his own cathartic story, his own loss of love, his own loss of pain, and his own loss of mother. Right? In spite of being so careful, so caregiving, he was unable to save his mother. So the case is with Shuggy Bain. Shuggy Bain के साथ भी वही केस है. He fails in saving his mother. So this was the novel. Shuggy Bain is destined to be a classic, a moving, immersive, and nuanced portrait of tight-knit social world, its people, and its values. This was the comment of Margaret Busby. Margaret Busby, chair of the Booker Prize Judges 2020, और उन्होंने इसको क्लासिक डिक्लेयर कर दिया था. No one can save it from becoming a classic. And now this is the list of the short-listed novels. Short listing में Burnt Sugar, The Shadow King, Real Life, Shuggy Bain, The New Wilderness, and The Mournable Body. And once again, my suggestion is to you, if you are preparing for serious examination, then at least you must know the names of the writers of these short-listed books. जो भी short-listed books हैं, इनके writer को जानना बहुत जरूरी है. Though I have given here the entire list of the long-listed novels. Love and Other Thought Experiments by Sophie Ward. Right, How Much of These Hills is Gold by Palms and Shuggy Bain, Douglas Stewart. The New Wilderness, Danny Cook. And then next novel, Harry Manning, The Mirror and the Light, Colum McGann की ये नावल है. फिर Kelly Reid, फिर Redhead by the Side of the Road, and then Burnt Sugar. फिर कौन सी नावल, द शैडो को, और फिर नावल द रियल लाइफ, राइट, और फिर गैब्रियल कॉर्जी की नावल है, एंड फिर द दिस मॉर्नेबल बॉडी. दीज आर द शॉर्ट लॉन्ग लिस्टेड वंस. एंड आउट ऑफ 13 लॉन्ग लिस्टेड, शॉर्ट लिस्ट कितनी होती है, शॉर्ट लिस्टेड नॉवेल्स कितनी होती हैं, ये भी आज पॉइंट है आपके क्वेश्चन का. बर्न सुगर, शैडो किंग, रियल लाइफ, Shuggy Bain, Wilderness, and Mournable Body. 6 novels are shortlisted out of 13 long-listed, and finally the finalist जो होते हैं, that is the Booker Prize winner. So Douglas Stewart, winner of the 2020 Booker Prize for the novel
Sugibane, and won another award in the same year, the मैन इंटरनेशनल बुकर अवार्ड. इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको दिया जाता है? इंटरनेशनल बुकर अवार्ड इज गिवन टू अ ट्रांसलेटेड वर्क, एंड इन 2020 दिस अवार्ड वाज गिवन टू वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यू वॉइसेस इन डच लिटरेचर. डच लिटरेचर, डच मतलब डेनमार्क, हॉलैंड, नीदरलैंड, किसको कहते हैं? यू बेटर नो कि हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है. And one of the greatest new voices in Dutch literature, मार्की लूकस रिजनेवेल्ट, इसकी नॉवेल को मिला था द मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. द नॉवेल was written in her mother tongue Dutch and it was translated into English by Michelle Hutchinson. And you know that Man International Award is given to a translated work and the prize money is distributed between the creator and the translator. दोनों को बांट दी जाती है. और ये डिस्कम्फर्टिंग ऑफ द इवनिंग was the name of the novel written in Dutch. ये important question है. The discomfort of the evening written by Marky Lucas Roosevelt and written in which language? It was written in Dutch. और once again like Stuart Douglas Sugibane जो उनकी डेब्यू नॉवेल थी, ये इनकी डेब्यू नॉवेल है. राइट, ये डेब्यू नॉवेल है डच राइटर की मार्की लूकस रूजवेल्ट की. 2018 में पब्लिश हुई थी एंड इन 2020 she became the first Dutch writer to win the International Booker Award. और 50,000 पाउंड अवार्ड होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का एंड इट इज शेयर्ड जॉइंटली विद द नॉवेल्स इंग्लिश ट्रांसलेटर मिशेल हचिनसन. राइट, दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास होगी 2019 के बुकर प्राइज पर. ऑल राइट, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड. और अगर एंजॉय किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा. मिलेंगे जल्दी ही विद 2019 बुकर प्राइज विनर्स एंड शॉर्ट लिस्टिंग, लॉन्ग लिस्टिंग नॉवेल्स. ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर. Thank you for watching and sharing the channel.